चलो, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? बताइएगा चैट बॉक्स में कि आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। शुरू करते फिर आज का लेसन, लर्न इंग्लिश विद सिंगम। And this session will be very epic and emotional for you guys. Let me just send the message in few of the groups and we'll get started. Just let me know in the chat box that are you guys getting my voice clearly or not. I think we are good to go. Chandrasekhar Tiwari. Okay, yes, all right. Okay, so chaliye, let's get started. So today's lesson is learn English with Singham. Okay, now आज का ये जो चैप्टर है ना, today's lesson is widely focused on how to talk about going shopping. Suppose if you are going shopping, okay, if you want to go to shopping or if you are asking someone about the shopping, then you must be able to ask them question. You must convey your thoughts, emotions clearly in understandable way, ताकि सामने वाले इंसान के साथ भी आप इंग्लिश में बोल पाए। या फिर अगर शॉपिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज के इस सिंघम के इस लेसन सेट के थ्रू हम करेंगे। ऑलराइट, नाउ अब हमारा लेसन सीखने का जो पैटर्न है वो कैसा होता है वो आपको तो पता ही है। फिर भी अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर हो या फिर एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले बता दूं कि आपको ये जो अमेजिंग स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी लर्निंग मेथड है ना, इसके थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए एक लेसन है जैसे कि आज का है लर्न इंग्लिश विद सिंघम। अब इस लेसन सेट में 4 से 5 इंटरकनेक्टेड लेसन्स है। ठीक है, पहला लेसन है स्टोरी का, जिसमें मैंने ये स्टोरी बनाई है, जिसमें क्या होता है क्या नहीं, कैसे इंस्पेक्टर सिंघम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कैसे बच्चों को वो टेडी बियर देते हैं और कैसे चोर को पकड़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है वो पर्पसफुली किया है ताकि वो आप विजुअलाइज कर पाए, प्लेन इन्फॉर्मेशन ना हो इसके लिए। उस स्टोरी को आपने पहले ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद हम वोकैबुलरी वर्ड्स के लेसन पर जाएंगे। पहला लेसन स्टोरी, ठीक है, दूसरा लेसन है वोकैबुलरी लेसन। अब इस स्टोरी में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिसका मीनिंग शायद आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, तो उसके लिए आपने इन वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग्स को आपने क्या करना होता है, लिखना होता है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए हैं और उसके बाद नीचे आपको माय सेंटेंसेस में आपको खुद का सेंटेंस लिखना होता है। और ये क्यों करेंगे हम क्योंकि जो कुछ भी आप सीखते हो उसके बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा ना, तो आपका ब्रेन उसे बड़ी जल्दी छोड़ देगा। आप कहते हो ना कि सर मैं जल्दी वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाता हूँ, तो आपने सिर्फ एक बात करनी है कि आपने ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को क्या करना है कि अपने खुद के सेंटेंसेस में बनाकर लिखना है। पहला हो गया स्टोरी, उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद आएगा क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी। और इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको I will be asking you series of क्वेश्चंस की सीरीज पूछूंगा जो इस स्टोरी पर आधारित है। और आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को आपने रिप्लाई देना होता है, क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस इतने फास्ट पूछूंगा कि आपको प्रोसेस करना भी थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि हमें वही तो करना है अल्टीमेटली कि आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी डेवलप करनी है। तो एबिलिटी डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश में सोचना भी पड़ेगा, प्रोसेसिंग भी फास्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी होती है जो थॉरली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है। एंड उसके बाद आखिरी वाला कौन सा लेसन है, उसके बाद होता है ग्रामर स्टोरी। फिर ग्रामर स्टोरी आपने क्या करना है, स्टडी करना है एक ही स्टोरी
अब ये पास्ट टेंस की स्टोरी है, प्रेजेंट टेंस में कैसे होगी और फ्यूचर टेंस में कैसे होगी, ये बस आपने क्या करना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपने इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी और फिर आखिरी में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बोल सकते हो या नहीं, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, वो भी देखना है, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड्स अगर आपने पढ़े हैं तो उनको यूज़ भी तो करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये जो स्टोरी है वो आपने बोलने की, किसी अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करनी है। अगर आप वो स्टोरी समझा पाए अपने वर्ड्स में, दैट मीन्स वो वर्ड आपके अपने हो चुके हैं, मरते दम तक आपके ब्रेन में वो सेट हो जाएंगे। बिलीव मी, दिस इज मैजिक, साइंस और आर्ट, जो चाहे वो कह लीजिए, बट दिस इज द मेथड टू एक्वायर इंग्लिश इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट मेथड टू एक्वायर इंग्लिश इन द वर्ल्ड। नहीं तो ग्रामर ट्रांसलेशन के चक्कर में ना पूछते निकल जाएंगे लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो चलो शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कुछ दोस्तों के साथ जो ग्रामर के इस चक्कर में फंसे हैं, और ये जो मैं क्रिएटिवली सोच कर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए। ऑलराइट, चलिए पे अटेंशन वेरी क्लोजली। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश विथ योर ईयर्स, not with your eyes. I don't want you to read. I want you to just listen it very, very carefully. This is the first rule. बचपन में हमने इसी ही लैंग्वेज सीखी है। Now let's go for this story. Singham going shopping. One day, Inspector Singham wanted to surprise his team with a party. Mr. Ajay Devgan is an inspector and he wanted to surprise his team with a party. So he decided to go shopping in a busy market near the police station. Okay, so there was a market, okay, there was shopping mall kind of a thing. There was a market just near his police station. He said, I need to buy snacks, decorations, and drinks. Singham said, I want to buy snacks, मुझे snacks खरीदने हैं, decorations, okay, party के लिए, and drinks, कुछ soft drinks वगैरह, ठीक है. And he thought, he walked into the first shop and he asked. So he got ready, okay, he got up in his car and he went into the market and he entered in the first shop and he asked, do you have balloons and lights? Well, he was looking for the balloons and the lights, maybe red, blue, green, yellow, okay, like a party lights. The shopkeeper smiled and showed him colorful items. As he entered the shop and he asked, can you show me some lights and balloons please? And the shopkeeper smiled. Oh well, yes, definitely sir, we have various varieties of balloons and lights. I hope you will like it. He said that. The shopkeeper smiled and showed him colorful items. Singham said, I'll take the red balloon and the fairy lights. Oh, well, I like these items, but I'll take only the red balloon and these fairy lights. Okay, so he said that. And he walked, as he walked to the next shop. Okay, so he left that shop and he went to the next shop. He went to the next shop. He noticed a group of children looking at the toys. When he was going at the second shop, he saw that कि कुछ बच्चे हैं and they were looking at the toys. Okay, group of children. There was not a kid or not a single child. There were few children. Okay, there was a group of children who were looking at the toys. And he asked and he said, tell me, what do you want to buy? As he saw them that these guys were looking at the toys, okay, with the joy in their eyes, but they cannot afford, they cannot buy it.
because they don't have money. So he went there and he asked those children, tell me, what do you want to buy? Singham asked them. A little girl said, I want this teddy bear. Oh, well, Singham uncle, I want that teddy bear, red teddy bear. But it's too expensive. The teddy bear was so expensive. It is too expensive. Singham smiled and bought the teddy bear for her. Well, because he had money. So he just went into the shop and he asked for the shopkeeper. He paid the bill and he bought that little red balloon. Not the balloon, the teddy bear for that little girl. And he said, here you go. Here is what you wanted. Next paragraph, next line. Always be happy, he said. Don't cry, okay? Don't crave for things. Always be happy. Whatever you have, whatever you had, okay? He said, the children cheered and Singham felt proud, okay? The children cheered for him. Yeah, Singham uncle is great. They cheered for him, okay? Children cheered for him and Singham felt proud, and the Inspector Singham, he feel that proudness at that moment, okay? He felt proud of himself. उसे लगा कि चलो उसने कुछ अच्छा काम किया है, right? He felt proud. While buying the snacks, Singham heard someone shouting, okay? So first he bought balloons, lights, then he helped a girl, okay? So he bought a teddy bear for her, and then he went to buy snacks. While buying snacks, Singham heard someone shouting. Oh no, someone was shouting, thief, 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 chor, 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 pakdo, pakdo, pakdo. Someone was shouting. A man was running away with a bag of money. A thief. He stole the bag of money from the shopkeeper and he was running away. And the man, the shopkeeper, whose bag was stolen by the thief, he said that, please someone help me. Please help. Thief, thief, thief. And Singham was there. Singham quickly stopped him. He grabbed his collar. Okay. He grabbed him. Okay. And he stopped him. And he returned back to the shopkeeper. So he caught the bad guy. Okay. And he returned the bag of money back to the original owner. That means to the shopkeeper. You are so brave, Inspector. The shopkeeper said. You are so brave. You are so brave, Inspector. Singham replied, I just do my duty, but now I must finish my shopping. Okay, so वो मतलब इतना भी हवा में नहीं गया कि सर आप बहुत शूरवीर हो बड़े हो. No, he just said that it's my duty. It's not hyper. Okay, let's not get hyper. It's my duty. It's my responsibility to take care of the normal people of this country. Okay, so he said that. Singham replied, I just do my duty, but now I must finish my shopping. And he said that, let me finish my shopping. After all the shopping, Singham carried the bags back to the station. Okay, after all the shopping, he had many bags in his hand. Okay, he had many bags in his hand and he carried all the bags back to the police station. His team was surprised and happy when they saw that the decoration and the snacks. His team were unaware of that. Our Inspector Singham, is throwing a huge party for them. They were unaware. They didn't know that Singham is giving them a party in the police station. Okay, so that's why they are surprised.
Singham carried a bag to the station. His team was surprised and happy. They were surprised, but they were very happy when they saw the decorations. They saw the decorations, balloons, teddy bear, and lights, and snacks, and drinks. This party is amazing, sir. Oh, yes. The head constable and the other policemen said that, well, this party is amazing, sir. Thank you for this party. Okay, this is amazing, they said. Singham smiled and he replied. Oh, well, he smiled and he replied, good teamwork deserve a good party. Good teamwork, as we are working, we all are working as a team. Okay, so we are doing a good work. Okay, so good teamwork deserve a good party. We are catching the bad guys in a team. Okay, so we are as a team must celebrate. एंड इतना तो बनता है कि हम साथ में है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक पार्टी छोटी सी बनती तो है. राइट, सो वी डिजर्व वर्क, डिजर्व बनती है. ओके, डिजर्व अ गुड पार्टी. एवरीवन एंजॉयड दैट इवनिंग एंड सिंघम फेल्ट कंटेंट आफ्टर अ बिजी डे. ओके, तो उस शाम को उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया. एंड सिंघम फेल्ट कंटेंट आफ्टर अ बिजी डे. उसको, सिंघम को लगा कि यस, आई डिड माई जॉब. एंड मेरे जो भी कलीग थे या फिर जिनके साथ मैं काम करता हुआ एज अ टीम, उन सबके लिए कुछ अच्छे पल का मैंने इंतज़ाम किया, सरप्राइज किया उनको शॉपिंग से. तो कहीं ना कहीं सिंघम को भी ये प्राउड फील हुआ था एंड वो सेटिस्फाइड फील था. ऑलराइट, सो दिस इज द स्टोरी. ओके, नाउ for me, this is an amazing story. All right, now let me read the story once again for you guys with no fillers, with no stop. I want you to enjoy, I want you to visualize. Okay, feel करो, इमोशंस आने दो. इमोशनलेस अगर लर्निंग होगी तो फिर वो भेजा आपका क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए याद रखेगा, छोड़ देगा उसके बाद. अगर आपकी इमोशंस उसके अंदर रहेगी ना, तो वो लर्निंग आपकी जिंदगी तक रखेगी. ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा. क्योंकि मैंने 12-13 साल अपनी जिंदगी के खर्च किए हैं इसमें. इंग्लिश अगर सीखनी है ना आपको, ये जो क्रिकेटर्स, एक्टर्स, ये जिस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं ना, ये कोई ग्रामर स्टडी करते हैं क्या? ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते बैठते हैं क्या? नहीं, रियल इनपुट, ऑब्जर्वेशन, और सबसे बड़ी चीज एक्सपोजर होता है. यही स्टोरी मैं बड़े आसानी से मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आपको समझा सकता हूँ. इन शॉर्ट चिपका भी सकता हूँ. आपको भी लगेगा हाँ यार भाई ये इंग्लिश टू हिंदी समझा रहे हैं, मतलब अच्छी है. लेकिन उससे होगा क्या कि आपका जो माइंड है वो ट्रांसलेशन का तो वही रहेगा ना. ट्रांसलेशन निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है. बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं. राइट, ठीक है, चलिए. तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास ये बुक्स होगी. इस बुक में हमारा जो चैप्टर है वो कौन से पेज पर है, चलिए 85 नंबर. ओके, 85 नंबर पर ये चैप्टर है. ठीक है, तो ये चैप्टर आपने क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है. ठीक है, एप्लीकेशन में आपको ये सेम ऑडियो स्टोरी भी है. ठीक है, वीडियो स्टोरी भी है. 1 से 1.5 मिनट की स्टोरी है. 10, 12, 15 मिनट तक आपने क्या करना है, सुनना है, समझना है, विजुअलाइज करना है. ठीक है, विजुअलाइज होने दो, वो एक्सपीरियंस करो. ये जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ सपोर्ट स्टडी के लिए है. ठीक है, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी लोग इस रियल लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो सपोर्ट स्टडी से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ स्टडी से हुए. ठीक है, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं ना, तो वो सपोर्ट स्टडी से नहीं आते, वो सेल्फ स्टडी से आते हैं. टीचर तो हर किसी को पढ़ाते हैं, लेकिन कोई जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट आ रहा है तो वो ऐसा क्या डिफरेंट करता है, वो होती है उसकी सेल्फ स्टडी. ठीक है, सिंपल लॉजिकल चीज़ है. मैं कुछ मतलब ऐसे हिस्टोरिकल बातें नहीं कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है. शुभम, हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम. ऑलराइट, ओके. सो
Let me read the story louder for you. Just pay attention. Close your eyes. Don't read. If you want to read, that's fine too. But I want you to learn English with your ears, okay? Get the exposure, input. Exposure जितना ज़्यादा होगा उतना आपका output रहेगा. Alright, so here we go. One day, Inspector Singham wanted to surprise his team with a party. He decided to go shopping in the busy market near his police station. I need to buy snacks, decorations, and drinks, he thought. He walked into the first shop and he asked, "Do you have balloons and lights?" The shopkeeper smiled and showed him colorful items. Singham said, "I'll take the red balloons and the fairy lights." As he walked to the next shop, he noticed a group of children looking at the toys. "What do you want to buy?" Singham asked them. A little girl said, "I want this teddy bear, but it's so expensive." Singham smiled and bought the teddy bear for her. "Here you go. Always be happy," he said. The children cheered, "Yay!" And Singham felt proud. While buying snacks, Singham heard someone shouting, "Thief! Thief! Thief!" A man was running away with a bag of money. Singham quickly stopped him and returned the bag to the shopkeeper. "You are so brave, Inspector," the shopkeeper said. Singham replied, I just do my duty. But now I must finish my shopping." After all the shopping, Singham carried the bags back to the police station. His team was surprised and happy when they saw the decorations and the snacks. "This party is amazing, sir," they said. Singham smiled and replied, "Good teamwork deserves a good party." Everyone enjoyed the evening and Singham felt content after the busy day. So far so good. Alright? चलिए, तो फिर अभी इसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स है ये मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पर रख रहा हूं. ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स है, पहला जो वर्ड है वो इंस्पेक्टर, वो भी आपको आता है. ठीक है, सरप्राइज, दैट मीन्स समथिंग डन अनएक्सपेक्टेडली. ओके, टू मेक समवन फील अमेज्ड. सरप्राइज यानी कि क्या, किसी को एक सडन ऐसी एक्शन देना या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करना जिससे कि वो खुश हो जाए, यानी कि सरप्राइज. तो आपने क्या करना है कि सरप्राइज से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखना है. यहां पर एग्जांपल सेंटेंस मैंने दिया है, सिंघम वांटेड टू सरप्राइज हिज टीम विद अ पार्टी. अब यहां पर आपने लिखना है कि आप किसको सरप्राइज करना चाहते हो, या ऐसी कौन सी चीज देकर आप आपके पेरेंट्स को सरप्राइज करना चाहते हो, आपके मम्मी पापा या फिर खुद को या फिर आपके स्पाउस को, कलीग को, मॉम डैड को, किन को आप ऐसी कौन सी उनकी फेवरेट चीज है जो देना चाहते हो. आपके पापा को आप कौन सी गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो एज अ सरप्राइज के तौर पर. राइट डाउन दैट, क्योंकि वो जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस आपको सीखने में हेल्प करेंगे. तो बड़ी जल्दी गिव अप कर दो क्या. इंग्लिश मैं जो देख रहा हूं ना यूट्यूब पर, जितने भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो उन्होंने मतलब सीखने का जो है ना वो गला घोट दिया है बच्चों का. और ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन का जहर जो है ना, ये जहर से लोग मरते हुए मैंने देखे हैं. इतने सारे लोगों ने इंग्लिश सीखना छोड़ दिया है, इंग्लिश को दुश्मन माना है. वो हमें नहीं करना है ना. तो मैं जो ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, इसको आप क्या करो, अपनाना सीखो. थोड़ा वक्त जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में आप खुद पर काम करो. खुद पर काम करोगे तो इसका फायदा आपको ही आपकी जिंदगी में होगा. दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, या फिर देखिए ना सर, एडजस्ट करिए ना प्लीज, मेरे लिए इतना करिए. ये एटीट्यूड आपका कभी नहीं होना चाहिए. करना है तो एकदम एटीट्यूड से, भाई साहब मैं ये क्वालिटी है मुझ में, ये काम कर सकता हूँ, मुझे इतनी इतनी सैलरी चाहिए. या फिर बिजनेस है तो उसमें तो एटीट्यूड होता ही है. तो वो
एटीट्यूड आपका कब आएगा? जब आपके अंदर कुछ स्किल होगा। स्किल ही सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है, और स्किल ही एक ऐसा हुनर है जिसके भरोसे पर आप मार्केट में खड़े हो सकते हो, जॉब्स मिल सकती हैं। आपको अगर किसी बच्चे को अगर हायर करना है, लेट्स से कि आपका एक बिजनेस है, अच्छा खासा कमा रहे हो आप, ऑफिस वगैरह है, और आपको अभी 4 लोगों की ज़रूरत है, तो आप कैसे लोगों को मतलब हायर करोगे? आप सैलरी देने वाले हो 25,000, तो आप कैसे लोगों को हायर करोगे? एक बार झांक कर देखना कि क्या आप आपके जैसे लोगों को हायर करोगे? नहीं ना। तो जिनमें कुछ टैलेंट होगा उन्हीं पर ये लोग जो है, या फिर क्या कहते हैं ना कि जीतने वाले घोड़े पर ही तो दाव लगाना सही होता है, और वही तो करते हैं। ठीक है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। जस्ट आपके पर्सपेक्टिव से ये सही है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो किसी ऐसे इंसान को थोड़ी ना हायर करेंगे कि जो दिखाता है, या फिर जिसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एबिलिटी थोड़ी कम है। एबिलिटी आपकी इससे बढ़ेगी। डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास है डिग्री, लेकिन वो एबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसका ओके, वोकैबुलरी वर्ड जो है वो आपने कर लेने हैं। नाउ विल डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी। क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी क्या है? एक सिंपल स्टोरी है। नाउ यू हैव टू लिसन द स्टोरी, ओके, 7 to 8 times, and now I will ask you few questions on that story, on that particular paragraph, on that particular event, and then you try to give me answers. All right? जब एक माँ छोटे बच्चे को जब बोलना सिखाती है ना, तो वो उस तरीके की जो हेल्दी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है ना, वो नेचुरली करेक्ट करने की एबिलिटी खुद की डेवलप होती है। ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने की एबिलिटी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी में डेवलप होगी। ठीक है, मुस्कान, ओके, ठीक है, चलो। सो हियर इज अ स्टोरी। One day, Inspector Singham wanted to surprise his team with a party. He decided to go shopping in the busy market near the police station. I need to buy snacks, decorations, and the drinks. Okay, so here we go. One day, Inspector Singham wanted to surprise his team. So who is the main character in the story? Was there a doctor? Oh, well, no. There was an inspector. An inspector, okay? An lagate chalo. Was there an inspector? Oh, well, yes, there was an inspector. And what was his name? Was his name Amol? Oh, well, no. What was his name? Well, his name was Singham, okay? And he was inspector. Was he a head constable or a constable? Well, no. He was not head constable or constable. He was an inspector. He was an inspector. And what was his name? Was his name Chulbul Pandey? No. His name was not Chulbul Pandey. Was his name Simba? Well, no. What was his name? His name was Singham. And he wanted to surprise his team with a party. Who wanted to surprise? How are you, sir? Chandrasekhar Tiwari. Well, I'm good. I'm good. आप कैसे हो? Okay. Who wanted to surprise? Well, Singham wanted to surprise. Whom did he want to surprise to? Come on, give me answers. Shout. जो भी हो आप बोलो. Whom did he want to surprise? Well, to his team. Did his team want to surprise Mr. Singham? Well, no. Inspector Singham wanted to surprise his team. Right? Let's go. With a party. Okay. And how did he want to surprise his team? Well, he wanted to surprise his team with a party. Wow, that's a great sign from the Singham.
Okay. Next, so he decided to go shopping in the busy market. Okay. So he decided to go to the shopping. Okay. Where did Singham decided to go? Where did he decided to go? Did he decided to go to the movie theater? No. Did he decided to go to the mall? Well, yes, nearest mall, or you can say the shopping center. Who decided to go to the nearest shopping center? Well, Singham. And why? Come on, tell me why. Why did he want to go to the nearest shopping center? Oh, well, yes, that's right. Because he wanted to surprise his team with a party. Right? He wanted to surprise his team with a party. समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? जो लोग अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो स्टोरी है, ये मैं आपको एक पैराग्राफ बता रहा हूं, एंड देन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज पूछ रहा हूं. आपने उनके आंसर्स देने हैं, गेस करने हैं, और आंसर्स देते वक्त आपने क्या करना है? ट्राई टू गिव मी आंसर्स इन द फुल सेंटेंस. ओके? If you just want to relax, don't want to give answer, that's fine too. Or if you want, you can speak 1 or 2 words. That's perfectly fine too. Okay? But आप एक extensive practice को feel करना चाहते हो, तो try to give me full answers. Okay? I'm giving you the information to process. Okay? लोग कहते हैं ना कि आपको इंग्लिश में सोचना है ना आपको. डू यू वॉन्ट टू थिंक इन इंग्लिश, या फिर ट्रांसलेट करना चाहते हो? तो इंग्लिश में सोचने के लिए आपको कुछ देना भी तो चाहिए. ये लोग कहते हैं कि हाँ इंग्लिश में सोचो. अरे भाई, कुछ सोचने के लिए तो दो. दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू टू थिंक इन इंग्लिश. ट्राई टू प्रोसेस इट fast as you can, and try to recall the information. Try to speak, और ऐसी आवाज में बोलो कि वो आपके कानों पर आए. बैठकर या सोकर अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा सा, मतलब जैसा एफर्ट चाहिए वैसा नहीं आएगा, जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आएगा. ठीक है? ओके, so we'll go for the paragraph. Okay. So he decided to go shopping in the busy market. What kind of a market was that? Was it a crowded market? Oh, well, yes, it was crowded market. And who went to the crowded market or the busy market? Who went to the market? Oh, well, Singham. Singham went to the market. What did he decide? What did he decide? Well, he decided to throw a surprise party to his teammate. Did he want to surprise his wife? Oh, no. Not to his wife. He wanted to surprise his team member. Okay? Next. The market near his police station. Okay. How far away was the market from the police station? Well, it was near. It was on the walking distance from the police station. What was on the walking distance from the police station? What was there? Well, the shopping market. Shopping market was just far away. The shopping market was on the walking distance from the police station. It was very close. Was it 60 kilometers from his police station? No. It was barely 300, 400, maybe 500 meters away from the police station. So he decided to go there. All right. And he wanted to surprise his team. Okay. Next. I need to buy snacks, decorations, and drinks. He thought, this brave inspector, he wanted to throw a party.
and he thought. Did he said or did he think? Well, yes, he thought. Who thought? Inspector Singham thought. And what did he think? Well, he think, I need to buy snacks, decorations and drinks. What did he want to buy? Did he want to buy a car, a dress, and a banana shake? Well, no. Not a car, not a dress, not a banana shake. Then what did he want to buy? Well, he wanted to buy snacks. Maybe some jalebis, laddus, right? Some spicy food, right? So he wanted to buy some snacks, decorations, flowers, all right, lights, decorative items, okay? So he wanted to buy snacks. This is the one thing. Second is decorations and the drinks, okay? Soft drinks, not that hard one you call wine or beer or something like that, okay? Drinks means occasionally you have that in a friendly environment, okay? So maybe orange juice, mango juice, all right? These kinds of drinks, okay? So who wanted to buy snacks, decorations and drinks? Who wanted to buy? Well, Inspector Singham wanted to buy snacks, decorations and drinks. Did he want to buy snacks, decorations and drinks for his wife and kids? Oh, no. Not for his wife and kids. He wanted to buy 3 items. And what are they? Well, snacks, decorations and drinks. He wanted to buy snacks, decorations and drinks for his team. For his team. And why? Come on, guess. Come on, tell me the answer. You're doing it very good. Yes, why? Well, because he wanted to surprise them. He wanted to surprise them. That's why he went to the nearest shopping center, okay, nearest market. It was on the walking distance from the police station, okay, and he went to the market. While going to the market, he thought, I must buy drink, okay, decorations and snacks. Yes, let's go. Okay, so he thought, he walked into the first shop and he asked, do we have balloons and lights? He went in the market and he saw the first shop, okay, and then he entered the shop and he asked the shopkeeper, okay, he did not say. He asked. If you are questioning someone, that means you are asking them. You are saying something, that means you are giving them information. So did he give information or did he want an information? Well, yes, he want an information. And what kind of information did he want? Well, he wanted to know about the balloons and lights. Okay, so he said to the shopkeeper, do you have balloons and lights? Can you show me some balloons and lights because I'm throwing party at my colleagues? Come on, show me some balloons and lights. That's what he asked. The shopkeeper smiled and he showed him colorful items. Shopkeeper smiled. Oh, well, yes, sir. He smiled and he said, well, yes, we have beautiful balloons. Okay. And he showed him the colorful items. He showed him balloons, a packet of balloons. There were so many balloons, red, green, blue, white, black. All these kinds of balloons were there. And he asked for the lights. So there were dancing lights. Okay. And it goes on and off and on and off. These kinds of
lights and bulbs were there, and the shopkeeper smiled and showed him colorful items. Singham said, "Oh, well, I'll take the red balloon and the fairy light." Okay, let me ask you the questions. Did he went to the second shop? Well, no. He went to the first shop. And what did he ask? What did he ask? Did he ask for clothes? No. Did he ask for lipsticks? No. What did he ask for? Well, he asked for balloon. He asked for balloons and lights. He asked for balloons and lights. And the shopkeeper smiled and showed him. Did the shopkeeper ignore him? Did he ignore him? Well, no. He did not ignore him. He smiled. Okay? And he said, "We have these colorful items." Did he give him balloons and lights? Well, yes. Who gave Singham balloons and lights? Who gave him balloons and lights? Did Amol? Well, no. I was not there. Was Amol a shopkeeper? No. Amol was not there. There was a shopkeeper, okay? And he gave balloons and lights. And then Inspector Singham said, "I'll take the red balloons and the fairy lights." What did Singham took or take? What did he take? Well, he took red balloon. Did he take blue and pink balloons? Well, no. He did not take blue or pink balloons. He took red balloons. Why? Why did he take red balloons? Well, he loved red color. He loved red color. That's why he took red balloons and fairy lights. What kind of lights did he take? Well, he took fairy lights. Okay? He took fairy lights. Okay, let's go for the next paragraph. समझ में आ रहा है ना? Are you guys enjoying? Are you guys enjoying? Please let me know in the chat box कि आपको समझ में आ रहा है. क्या आप आंसर्स दे पा रहे हो? दे पा रहे हो या नहीं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. चलिए 8:45 हो गए, अभी दूसरी बैच का वक्त हो चुका है. तो आज का ये सेशन जो है हमें यहीं पर रुकना होगा और कल जो हमारा सेशन होगा वो यहाँ से शुरू होगा एज वी वॉक टू द नेक्स्ट शॉप. ओके, एक लेसन की हम 2 से 3 दिन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको बोलने के लिए भी आसानी हो. ऐसा नहीं है कि बस आपने ये कलरफुल इन्फॉर्मेशन एक बार देख ली तो बस आपको ये सारे वर्ड्स और ये जो सिचुएशंस है जैसे कि तैसा बोलना आएगा या फिर बोल सकते हो. नहीं, इसको आपको रिपीट करना होगा. रिमेंबर, रिपीटेशन इज ए मदर ऑफ द स्किल्स. क्या एक बार वो डंबल उठाने से पावर आ जाती है? क्या नहीं, उसे बार बार उठाना पड़ता है, तब कई मसल्स में पावर आती है. और ये बार बार आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी आपके ब्रेन के थ्रू जानी देनी होगी. आप आंसर्स दोगे, फिर जो करेक्ट वर्जन ऑफ आंसर है वो मेरा सुनने के बाद फिर आप खुद को रेक्टिफाई और करेक्ट करते चले जाओगे और इसी तरीके से आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस, बोलने का ग्रामेटिकली करेक्ट, वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा. ऑलराइट, बिलीव मी, मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सब ने यही प्रोसेस अप्लाई किया है एंड दे गॉट अमेजिंग रिजल्ट. 2 या 3 महीने में उनको इतना मतलब ऐसा अमेजिंग रिजल्ट मिला है. I promise you and I guarantee you that if you follow my rules and instructions properly, you'll be having that perfect American accent within few days. मैंने इसी तरीके से 7-8 लैंग्वेजेस सीखी है. जापानीज जो मैं अभी सीख रहा हूँ, जापानीज, स्पेनिश एंड चाइनीज, ये तीनों भी लैंग्वेजेस जो है मैं वो सीख रहा हूँ और वो इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी. राइट, मैंने मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लिया है. व्हाट वाज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, लाइक इस तरीके के ऑडियो मैं खुद सुनता हूँ इन चाइनीज एंड आई ट्राई टू गिव आंसर्स माई सेल्फ. राइट, सो ये सिंपल, रियल, ऑथेंटिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ये है. सो बस यही करना है.
बाकी लेसन सेट आपको कैसा लगा, राइट डाउन इन द कमेंट्स। एप्लीकेशन में आपको ये सारे लेसन जो है वो अपलोडेड है। यूट्यूब पर क्या है कि 1-1.5 घंटे का लेसन हो जाता है, पर वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 मिनट की स्टोरी है, उसके बाद में वोकैबुलरी नहीं, उसके बाद में प्योर क्वालिटी जो टाइम है आपका स्पेंड हो इंग्लिश के साथ, रियल इंग्लिश के साथ, तो उसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी है। और उसमें एक ठहराव है, एक रिदम है, एक मेलोडी है, और जिस पर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बोल रहे हो, ठीक है। और इस तरीके से आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखोगे और कोई भी ग्रामर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाय द वे हम अभी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके बाद जो लेसन्स आएंगे वो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीज़ें होती है। और वैसे भी ग्रामर स्टोरी तो होती ही है। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर today's lesson. I'll see you soon in the tomorrow's live class sharp at 9 o'clock. Till then, bye bye.